welcome to English lecture. In last lecture we have studied about the lesson An Epitome of Courage, that is about the great personality, the great scientist Stephen Hawking. So we finished some paragraph. In this lecture we will be starting from the rest paragraph. Let's begin. So let's start the rest paragraph. Though confined to a wheelchair with no control over his body, save a finger, and with a computer to help him express his thoughts, Dr. Hawkins is an authority on profound subjects of science. Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him. He is a fellow of the Royal Society and a member of US National Academy of Sciences. So in last paragraph we saw how Stephen Hawking described or he invented the concept of black holes. He was continuing his research with black holes, though he was confined with a wheelchair. Now in this paragraph it is said that though confined to a wheelchair with no control over his body, as you know, in the last some paragraph it is already described that his organs were, his limbs were not working. It was most of disabled, but his finger was working somewhere, which was attached with a computer. So with the help of the finger and a computer, he can express his thoughts, his ideas, his feelings, his emotions. Dr. Hawkins is an authority on profound subjects of science. Dr. Hawkins was having the power, he was having the right on profound means very famous subjects of science. Numerous honorary doctorates and award have been bestowed on him. Bestowed on him means granted as an honor. उनको दिया गया, उनको सम्मान के साथ में दिया गया. क्या? बहुत सारे अवार्ड्स. Numerous means very much, unnumberable. Honorary मतलब सम्मान. Doctorates is a kind of उपाधि बोलते हैं उसको. और बहुत सारे awards he has been bestowed. He is a fellow of the Royal Society and he is a fellow of means person of a learned society. वो किसके कनेक्टेड थे? एक जो सोसाइटी होती है जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग, लॉयल लोग रहते हैं, वो उस सोसाइटी में क्या रहते हैं? फेलो. एज अ person of a learned society, he was a fellow of the Royal Society and a member of, और member भी होते हैं उसमें. कहाँ पर? US National Academy of Science. US National Academy of Science के member भी रहते हैं और उसमें fellow भी रहते हैं. In spite of being considered Einstein equal in intelligence, Dr. Hawkins is a very humble man, a simple down-to-earth man. He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. His writing is full of wit and humor. His style is so lucid that non-scientists can also understand him. His book, A Brief History of Time,
is one of the best-selling books of our times. In spite of means despite of, बावजूद, किसके बावजूद? आइंस्टाइंस इक्वल इन इंटेलिजेंस. इट इज़ कंसीडर्ड, ऐसा बोला जाता है कि स्टीफन हॉकिंग वॉज कंसीडर्ड एज ए इक्विवेलेंट इन इंटेलिजेंस विथ आइंस्टाइन. उनको, उनकी तुलना जो है, उनको समान माना जाता है किससे? आइंस्टाइन, द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन. Dr. Hawkins is a very humble man, yet he was very humble. जबकि हॉकिंग को किसके बराबर माना जाता है? द ग्रेट, द लेजेंड साइंटिस्ट आइंस्टाइन के बराबर. तो भी वो इतने हम्बल, इतने नम्र है, अ सिंपल, डाउन टू अर्थ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही पोलाइट है, एंड हमेशा ज़मीन पे, हमेशा एक कॉमन पर्सन, एक साधारण आदमी के जैसे बिहेव करते. ही हैज़ ऑथर्ड मेनी बुक्स डीलिंग विथ हिज ऑसम आइडियाज़ कीपिंग अ लेमन इन माइंड. उन्होंने बहुत सारे, ऑथर्ड मीन्स टू बी द ऑथर ऑफ बुक, बहुत सारी बुक लिखा, मेनी बुक्स, जो कि किससे डील करती है? जिसमें क्या? हिज ऑसम आइडियाज़, उनके बहुत सारे मिरेकल, बहुत सारे ट्रिमेंडस आइडियाज़ जिसमें लिखे हुए हैं, जिसमें प्रेजेंट है, एंड लेमैन इन माइंड. बट ही ऑलवेज ट्राइज टू कीप इन हिज माइंड दैट अ कॉमन पर्सन एंड अ रस्टिक पर्सन कैन अंडरस्टैंड हिज आइडियाज़. लेमैन मीन्स layman, an ordinary person without any special skills or knowledge, you can say ordinary, एक जो common rustic people है, they can understand what he wants to say. वो भी इनकी भावनाओं को, इनकी जो concepts है उसको समझ सकता है. His writing is full of wit and humor. उनकी जो writing है, it is full of wit and humor, मतलब कि उसमें बहुत सारी नॉलेज की बातें लिखी हुई है, बहुत सारी उसमें हमको नॉलेज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलता है. हिज स्टाइल इज़ सो ल्यूसिड. उनका जो लिखने का स्टाइल है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. लूसिड मीन्स ईजी टू अंडरस्टैंड, जो कोई भी समझ सकता है. एक्सप्रेस क्लियरली, एंड नॉन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम. और एक नॉन साइंटिस्ट, मतलब जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, दे कैन ऑल्सो, इवन दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेजेस. हिज बुक, what is the name of the book? A Brief History of Time, which is written by the great scientist Stephen Hawking, is one of the best selling books of our times. ये जो बुक है, ये उस समय की बेस्ट सेलिंग, मतलब ये बुक सबसे ज़्यादा उस समय डिमांड में थी. What is the name of book? A Brief History of Times. Let's see the next paragraph. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawkins, अगर हम उनके बीमारी के बारे में, what is the name of that disease? That dreadful, very rare disease. The name of that disease is ALS. When somebody asks about his disease, experience of his disease, his feeling about his disease, that is dreadful. Dreadful, that is very terrible disease, ALS. What is the reaction of Dr. Hawkins? Dr. Hawkins, the quintessence of optimism and hope, जो कि किसकी प्रतिमा है? Quintessence means a perfect, a finest example of optimism. Optimism means what? आशा, जो कि होप के फाइनेस्ट एग्जाम्पल है. अगर उनके बारे में वो क्या बोलते हैं, what he says about his disease, not very different from the rest. The disease is what he understand, it is common.
I try and deal as a normal, as alive, alive as possible. So he was behaving like a normal people. He doesn't think that he was having some change in his life due to that terrible disease. So it was as usual, or you can say very normal, with the disease in his life. I tried lead as normal a life as possible. So he never think, he never interrupt, uh, he never remind, he never, you know, think about the disease, not think about my condition. And he was not apologize, he was not regretting, he was not thinking about his condition. He never, you can say, complained even to the god about the about his disease. It prevent me from doing which are not many. And his will was, उनकी जो स्टैमिना होती है, उनका जो विल होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि ही नेवर कंप्लेन टू समवन, ही नेवर कंप्लेन टू एनीवन. शायद ये सबके बस की बात नहीं है, विच आर नॉट मेरी, जो सब लोग नहीं कर पाते, क्योंकि सब लोग इतने पॉजिटिव नहीं रहते. ही वॉज हैविंग वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड and he was continue with his work, research, invention. That's why he never call, he never reminds, he never remember the disease between. Let's see the example. Next paragraph. Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, millennium means a period of 1000 years. Doctor firmly believes. डॉक्टर एज यूजल बिलीव क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट मिलेनियम, कि आने वाले 1000 सालों में साइंस विल डिस्कवर, कि साइंस इतना स्ट्रॉन्ग होगा, इट कैन डिस्कवर द कोर सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स. कोर मीन्स द वेरी सेंटर ऑफ, the very most essential part of anything. किसी भी चीज़ के जो सेंट्रल पार्ट होती है, जो एकदम मेन चीज़ होता है, उसको फाइंड आउट करने में साइंस और उसका ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुई, अबाउट हिस्ट्री एंड मे बी इवन द प्रेडिक्शन टू अल्टीमेट डिमाइस, और ये यूनिवर्स ख़त्म भी कैसे होगा, इट मे बी प्रेडिक्टेड बाय द साइंस. द साइंस इज द ओनली वे, only source that can find out, that can discover, that can predict its ultimate demise as well. So according to him, that science is the way, the science is the only things. After some times, after a millennium, after the next millennium, after 1000 years of a time, years, it may be predicted by science about the universe, all about the universe may be predicted by the science. Like Dr. Hawkins, there are many people who display exemplary courage in their lives. Likewise, Hawking, we have many examples. So who proved that being disabled, who proved that disability is the state of mind, not a will, not a courage. So we have many examples in our life, many people who being disabled proved themselves that it is a state of mind. Okay, so let's salute all those brave people
उन सभी महान आत्माओं को हमें सल्यूट करना चाहिए, एंड हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल्ड स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट। क्योंकि जो डिसेबल्ड होने के बाद भी उन्होंने प्रूफ किया कि जो डिसेबिलिटी है वो हमारे माइंड की स्थिति है, ना कि हमारे। अगर हम सोच लें कि हम डिसेबल्ड हैं तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर हम लोग डिसेबल्ड जो होता है चीज़ की बोल सकते हैं कि येस वी आर द पर्सन चोजन बाय गॉड, कि हम ही वो बंदे हैं, हम ही वो पर्सन है जिसको भगवान ने चुना है ऐसी डिजीज़ देने के लिए, बिकॉज वी आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सो गॉड थिंक्स दैट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए गॉड ने ये चीज़ हमें ही प्रोवाइड की है। वी हैव मेनी एग्जाम्पल, जॉन मिल्टन जिसकी 28 साल की उम्र में जो अंधे हो गए थे, बेथोवन, स्टीफन हॉकिंग एज वेल एज वॉल्ट डिस्नी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, हेलन केलर, सुधा चंद्रन and Franklin Roosevelt. So we have lots of example. We should take inspiration from those great person. I hope you understand this lesson. Thank you so much.